हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम करेंगे Realme 8 Pro का PUBG गेमिंग टेस्ट। मैं इस फोन में पिछले 3 दिन से गेमिंग वगैरह कर रहा हूं, तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस फोन में PUBG गेमिंग का, कैसे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस फोन में, हीटिंग इशू वगैरह देखने को मिलता है या फिर नहीं, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं या फिर नहीं, और गेमिंग के टाइम पे हमें कैसी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक नॉर्मल ओवरव्यू दे देता हूँ कि फोन में आपको एक 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, प्लस काफी लाइट वेट भी है ये फोन, तो हाथ में काफी अच्छा ग्रिप बनेगा जब आप गेमिंग वगैरह करोगे तो, क्योंकि ज्यादा बड़ा फोन नहीं है ये। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स भी आपको काफी ज्यादा मस्त लगेंगे देखने में। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये फोन 6GB और 8GB रैम के ऑप्शन के साथ में आता है। ग्राफिक सेटिंग की अगर मैं बात करूं तो स्मूथ में अल्ट्रा का और HD में आपको हाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लो सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लो सेटिंग्स में आपको FPS 35 से 40 FPS के बीच में देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम, लेकिन अगर सामने एनिमी वगैरह हो तो 30 से 32 तक भी पहुंच जाता है FPS अगर फाइट वगैरह हो रही हो तो। ऐसे तो इस फोन में आपको काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स भी थोड़े बहुत आपको देखने को मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि फ्रेम ड्रॉप्स की वजह से आप गेमिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। Team has scored for the first time! No mercy! Reloading! Enemy down! Target down! Killing spree for the blue team! Enemy down! Reloading! Nice shot! Cover me! Kill! Target down! Reloading! Team is in the lead. Kill! Nice! Killing spree for the blue team! अब बात कर लेते हैं हम लोग हाई ग्राफिक्स की, मतलब HD प्लस हाई सेटिंग्स की। तो HD हाई सेटिंग्स में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गेमिंग करो, क्योंकि फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ग्राफिक्स वगैरह थोड़े बेटर डेफिनेटली लगेंगे आपको लो सेटिंग्स के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन स्मूथ एक्सपीरियंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना। FPS आपको 28, 30, 32 तक ही आपको देखने को मिलेगी हाई सेटिंग्स में, और रश वगैरह के टाइम पे इससे भी कम हो जाती है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस फोन के हाई सेटिंग्स में खेलो। अब बात आ जाती है बैटरी लाइफ इस फोन में आपको कैसी देखने को मिलती है और हीटिंग की इशू आती है या फिर नहीं। तो बैटरी बैकअप की सबसे पहले बात करूं तो आधे घंटे की गेम प्ले में मुझे अराउंड 10% तक की डिक्रीज देखने को मिलती है। जितनी बार भी मैंने टेस्ट किया है, कभी 10% डिक्रीज, कभी 8%, तो डिपेंड करता है। और हीटिंग की बात करूं तो वैसे तो अभी गर्मी का सीजन है तो सभी फोन्स में आपको हीट देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन ज्यादा बहुत हीट देखने को नहीं मिली है मुझे अभी तक। वार्म अच्छी खासी देखने को मिल जाती है कि वार्म होती है, लेकिन हाथ जल जाए उस टाइप का भयानक नहीं। बहुत ज्यादा हीट मुझे देखने को नहीं मिला है अभी तक इस फोन में। Watch out! point for the red team! Reloading! Enemy! 2 points for the red team!
Kill! Cover me! Reloading! Cover me! Enemy down! Reloading! अब बात आती है कि क्या आपको Realme 8 Pro गेमिंग पर्पस से लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपको इस प्राइस में काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जैसे कि Redmi Note 10 Pro सीरीज, उसके लिए आप जा सकते हो या फिर वेट कर सकते हो। अभी Poco X3 Pro आने वाला है जिसमें कि आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, Qualcomm Snapdragon का 860 का प्रोसेसर, जो कि आपको 18,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो आप उसके लिए रुक सकते हो, लेकिन इस फोन को मैं आपको गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।